Have you ever felt that life and opportunities are knocking at your door, but you're not able to answer them? Just because you don't have the energy or the motivation, or you're scared, or you just feel disconnected from everything around you. कभी ऐसा फील हुआ है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आपको पता है कि क्या डिसीजन लेना है, लेकिन आपको अंदर से वो पावर नहीं फील हो रही है उस डिसीजन को लेने की? यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली फेलिंग एट मेकिंग दैट डिसीजन। या फिर जब किसी के सामने अपने ओपिनियंस को वॉइस आउट करने की बात होती है, लेट्स से यू हैव टू टेक अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट और इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और एनीबडी एल्स, you know what is right, but still you are not able to take that stand for yourself. All of these are clear signs that you are disconnected from your internal power. You know, all of us have this bright, shining, beautiful, strong internal power. ये हम सभी के अंदर होती है। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ आर लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंग्स दैट वी फेस इन आर लाइफ, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा एंड इवेंट्स in our life, this internal power starts to diminish with time. If I have to explain this internal inherent power to you in simple terms, let's take an example of a flashlight, a torchlight, and think of a torchlight inside of you and it's shining bright because your internal power is this bright, boundless, shining, स्ट्रॉन्ग पावर, राइट? ये आपके अंदर है। अभी टॉर्च एकदम ज़बरदस्त जल रहा है। अभी क्या होता है, व्हेन इन आवर लाइफ वी हैव सम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, वी हैव सम फेलियर्स, वी हैव सम रिजेक्शन और ट्रॉमा और अबैंडनमेंट या नेगेटिविटी, तो उसकी वजह से इस फ्लैशलाइट के ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाती है। नाउ विद द लेयर्स ऑफ द नेगेटिविटी, व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन इज दैट योर इंटरनल पावर, इट्स लाइट, इट स्टार्ट्स टू डिम डाउन। धीरे धीरे ये लाइट कम होने लगती है। And you start feeling dull, demotivated, lethargic, out of energy, negative, and all of that. Now, what are your options here? You have two options. One, since you are feeling dim, your light is dimming on the inside, you put some light on the outside. ये मेटाफर है ऑफ कोर्स। तो बाहर लाइट लगाने का क्या मतलब है, दैट यू स्टार्ट मे बी मेकिंग एन एम्बिशन एंड गोइंग आफ्टर इट, यू स्टार्ट चेजिंग मनी, फेम, नेम, रिलेशनशिप्स, सेक्स, एट्सेट्रा. There's nothing wrong in going after these things. But when your internal light is dim, when you're disconnected from your true internal power, all these external things are just temporary solutions and they are just distraction. The second option now is to remove these layers and just get the light back, because the light is not off, it is burning, the light is on, it's just that you have layers over it. तो वो layers को remove करके वो light तो जल ही रही है, तो वापस से आपकी power आ जाएगी. It's as simple as that if I have to explain it to you. Taking the second option means that you're taking the journey within. You have to understand your within, your inner world better, so that you can understand your inner power better, so that you can help it shine again. And I have all these conversations about rewiring our inner world, causing breakthroughs and transformation in our life with my guest on my podcast, which is called The Journey Within, that you can watch on this link here. You can also follow me on Instagram for more updates. Now let's get back to the topic of this video. Now let's understand our true inner power in depth. Our true inner power is our inner ability, our inner strength, our resilience, the authenticity that we live our life with. Now, feeling disconnected from our internal power means that we are not connected to our own strength. We are not connected to our true potential. We are not connected to who we truly are. And that is when all the problems start to occur. Now, let's talk about 4 clear signs that will help you understand if you are disconnected from your power. You know, even Jordan Peterson, who is a very popular psychologist, he says that a problem well defined is half problem solved. तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लोगे ना, तो आधा सोल्यूशन वहीं मिल जाता है. तो चलो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. Number 1 sign that you're disconnected from your power is lack of confidence. You find it very difficult to take decisions in your life, whether it's about your career, following a passion, finding a new opportunity, or asking a girl out or a guy out, going out and making new friends. Whatever it is, you are just lacking confidence from within yourself to take any decision in your life. You are just surrounded with this cloud of negative self-talk. You're constantly, doubting yourself. You're getting no validation from your within. When you don't get the validation from within, you start seeking the validation from the outside world. तो उस केस में क्या होता है, either you get the validation from them or you don't. Either people support you or they don't. Now,
when people don't support you, that's the worst, because you are anyway not feeling confident. You are anyway not able to take any decisions. And people are also now saying negative things to you. That multiplies your self doubt, that multiplies your negativity, and is the worst spot. The second option is that people support you. Now you are not feeling confident about your talents and your decisions, but people say, अरे यार तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम तो बहुत सही करते हो. लेकिन you are disconnected from your true inner power. In that case, even when you get external validation, that is not enough for you. You don't believe them. चेक करके देखो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली आके बोलती है यार तुम बढ़िया कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये हो जाएगा, पर आपको भरोसा नहीं होता है उनकी बात पे. आपको लगता है कि ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस. Think of that heartbreak after which your friend was telling you that, you will get past this, or after failing in that exam. You were not able to believe them. They were telling you that you have the power to overcome this, but you were not, because you were not getting that validation, that confidence from within. You were disconnected from your power. This is the number one sign. The second sign is that you have immense fear of failure. Fear of failure even before trying something. In your mind, you're just calculating that you're failing at it. It's just constant negative thinking happening with you. You're not able to take any risks. And when you're not taking risk in life, you are not, sort of catching up with the opportunities that you have in your life, because every opportunity will come with some risk, will come with some uncertainty. Life is very unpredictable. So अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सब कुछ गारंटी के साथ आएगा, ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपका fear of failure इतना बड़ा है that you are not able to kind of go past that. ये fear of failure इसलिए बड़ा है because you are not connected to your true inner power. Third sign that you're disconnected from your power is that you feel stuck in the comparison trap. You start comparing how you look, what you do, what are your opportunities, your progress, everything with others. And then two things happen. One, you start giving your ego this fake boost by feeling that you're better than everything and everybody else. आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट दीज पीपल इन योर लाइफ. ये वाले लोग ना अपनी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन खुद होते हैं. बिकॉज वेन यू स्टार्ट फीलिंग यू आर द बेस्ट, देन यू स्टॉप लर्निंग फ्रॉम अदर्स, यू स्टॉप लर्निंग फ्रॉम लाइफ दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. एंड वेन यू स्टॉप लर्निंग, देन माई फ्रेंड लाइफ स्टॉप्स देयर. You are just, passing your days. You're not actually living. And the second thing that happens when you compare yourself is that you start feeling low about yourself. You start feeling that you have less off than everybody else. Your life is the worst. And that is again a bad thing to do. Because you are disconnected from true inner power that you have, you start, getting into all these comparison traps. That brings you down. The fourth sign that you're disconnected from your power is that you're feeling stuck. You feel that life is not moving for you. You feel helpless, hopeless, demotivated, lack of energy, and you don't see a way out of this situation. In this case, either you just, give up, or the second thing that happens is that you start daydreaming. You're waiting for some external miracle to happen to save you from this stuck situation. You completely give up on yourself. So this clearly means that you are disconnected with your true inner power, your internal, resilience, your internal brightness that is going to help you move ahead in your life. So if you are feeling any of these signs, that clearly means that you are not connected to your inner power. Now that you have understood the signs of being disconnected from your true power, the next obvious question is, how do I reclaim my power? How do I connect back to my true inner power? The journey to reclaiming your true inner power starts at self-reflection. And that is my first and the foremost method or the tip for you to start. Self-reflection means reflecting upon, thinking about your thoughts and feelings deeply, and listen what they are talking to you, what your thoughts are saying and suggesting, what are the gaps that you have in your behavior, what is your self-talk. Reflect karo, socho apne thoughts ke bare mein. Because when you start doing that, you start seeing gaps in your life. आपको समझ आता है कहाँ पे कौन सी चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं. One of the clear-cut methods to reflect is journaling. I have made a detailed video on journaling that you can watch here on this link, that will help you to write your journal in a more effective manner so that you're able to reap the most benefits out of it. The second method to reclaim your power back is
setting clear boundaries. Please start to say no to the things that you don't want to say yes to. हमें अंदर जो हमारा ट्रू पावर है, इनर पावर जिसकी हम बात करें, वो हमेशा हमें इंट्यूटिवली बताती है कौन सी चीज़ें हम करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं. वी जस्ट इन द प्रेशर ऑफ प्लीजिंग समबडी एल्स और थिंकिंग दैट उनको बुरा ना लग जाए, इस सब चक्कर में हम नो नहीं बोलते हैं. लेकिन हमारी ट्रू इनर पावर हमें गाइड कर रही होती है नो बोलने के लिए, और हम उसको शांत कर देते हैं. सो टू रीगेन द एक्सेस टू दैट इनर पावर इज स्टार्ट सेइंग नो टू थिंग्स दैट योर इंट्यूशन इज नॉट अलाइनिंग विद. दिस डज नॉट मीन कि आप लोगों को रूड हो जाओ, आप किसी की हेल्प ना करो और आप अपनी सिर्फ ईगो के बबल में अपनी लाइफ को चलाओ. इट डजंट मीन दैट. It means that dig deeper and understand that what is it that is not aligning with your true value and belief system, and start saying no to those things. Third way to reclaim your power is embrace authenticity. Authenticity का मतलब है जो आप सच में है ना, बस उसको आप जीना शुरू कर दीजिए. That is authenticity. And when you start embracing authenticity, you actually start playing on your strengths. जब तक हम ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग ऑन आर स्ट्रेंथ. इनफैक्ट वी आर डाउन प्लेइंग ऑन आर स्ट्रेंथ एंड वी आर जस्ट फ्यूलिंग आर वीकनेसेस एंड द नेगेटिव सेल्फ टॉक. जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ, माई रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अगर मैं वहाँ से आज की बात करूँ, आई एम क्रिएटिंग सो मच कॉन्टेंट फॉर you guys every single week. My power is coming from authenticity. I'll tell you why. Because when I was introduced to social media, मैंने देखा कि वहाँ पे जो मेरे कंटेम्प्रेरीज थे, जो मेरे फ्रेंड्स कह लीजिए, या जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ, जो कि एंटरटेनमेंट और शोबिज़ इंडस्ट्री जहाँ मैं काम करती थी, आई यूज टू सी वेरी ग्लैमरस पिक्चर्स ऑफ पीपल पेंटेड ओवर सोशल मीडिया all the time, and I'm not a person who is like that in my personal life. Of course, when I am hosting a show, when I'm out there acting or something, then I am of course dolled up, but in my personal life I'm not like that. So when I saw all these beautiful pictures, it just scared the hell out of me. I was like, यार ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा. फिर कुछ टाइम बाद प्रेशर आने लगा कि अरे यार आपका तो इंस्टाग्राम अपडेटेड नहीं, आप कुछ फ़ोटोज़ डालो. मैंने कुछ दिन जेन्युइनली कोशिश की, and that's when I was being not authentic. I was being inauthentic. I started, dolling up and taking those. उस टाइम पे पाउट वाले, ऐसे वाले पिक्चर्स बहुत चलने लगे, तो मैं वो सब भी करके डालने लगी. और मुझे अंदर से इतना गंदा फील होता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ. मतलब माई टैलेंट इज़ टू गो ऑन स्टेज एंड स्पीक टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल. माई टैलेंट इज़ नॉट टू मेक अ परफेक्ट पाउट. देन आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ मैनी ईयर्स, आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड बीइंग ऑथेंटिक. फिर मैं सोशल मीडिया पे अपडेट्स वही करने लगी जो मैं एक्चुअली हूँ. तो मेरे सारे स्वेटी वर्कआउट्स, मेरे ऐसे उलझे टेढ़े मेढ़े बाल, विदाउट मेकअप पिक्चर्स, सिर्फ मुझे जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं लिख कर एक कैराउजल पोस्ट में डालने लगी, और इस तरह से फिर मैं अपने आप को बिल्ड करने लगी. ऑफकोर्स बहुत सारे लोग इस कंटेंट से कनेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको लगता था कि आप तो शोबिज़ में हो, एंटरटेनमेंट में हो, तो यू शुड पोस्ट सर्टेन काइंड ऑफ पिक्चर्स. लेकिन कुछ लोग बहुत डीपली कनेक्ट हो गए इससे. मैं अपने आप से बहुत डीपली कनेक्ट हो गई, बिकॉज आई वॉज लिविंग माई ऑथेंटिक सेल्फ. सो वॉट एवर योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ इज़ ना, लिव दैट. दैट विल हेल्प यू कनेक्ट बैक टू योर स्ट्रेंथ. आप क्या हो? मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत अच्छे से लोगों को कोच कर सकती हूँ. मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ. मेरी स्ट्रेंथ ये है दैट आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली. आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑन दैट, राइट? And the fourth way to reclaim your power, to gain access to your inner power, is taking actions. हम बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं. I'm sure you also watch a lot of motivation videos and all of that. अच्छी बात है, लेकिन your transformation, your journey to reclaiming your power will start from taking actions. And when I say taking action, I'm not saying कि आप जाके पहाड़ हिलाने शुरू कर दो. It's about taking small, simple actions with consistency. कंसिस्टेंसी इज़ वेयर द एक्चुअल मीट लाइज, जहाँ से एक्चुअल चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं. तो एक्शन लेना शुरू करो अपनी लाइफ में. जिस भी एरिया में आपको लग रहा है आपकी पावर नहीं है, जहाँ पे भी आप पावरलेस फील कर रहे हो, अगर डिसीजन लेने में पावरलेस फील करते हो, आपको डिसीजन नहीं लेने आते समझ में, छोटे छोटे जगहों पे डिसीजंस लेना शुरू करो और डिसीजंस के लिए स्टैंड अप होना शुरू करो. या तो गलत होगा डिसीजन या सही होगा. गलत होगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. हैव द करेज टू फेस दोस. और सही होगा तो फिर तो सही हो ही गया. इट इज़ वे बेटर देन सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग कि मैं लूँ या ना लूँ. स्टार्ट मेकिंग सम गोल्स फॉर योर सेल्फ, छोटे छोटे गोल्स, एंड स्टार्ट गोइंग आफ्टर दोज गोल्स.
डोंट मेक वेग गोल्स, फिर क्योंकि एक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर मैंने एक गोल बनाया, वेग गोल, कि मुझे 2024 में बहुत सारी किताबें पढ़नी है। अब ये बिल्कुल वेग गोल है, मुझे पता नहीं बहुत सारी का क्या मतलब है। डज इट मीन 20 बुक्स इन द ईयर, इट मीन्स 10, और इट मीन्स 200? आई डोंट नो वॉट इट इज़। तो जब तक आप उसे एक क्लियर गोल में नहीं बनाओगे ना, एक्शन भी नहीं ले पाओगे। तो क्लियर गोल्स बनाना अपने लिए शुरू करें। And if you find challenge with making goals and with rewiring your life, then I have a video on this topic, especially on this topic. I think it's of 12-13 minutes. You can watch it on the link here if you'd like, and start taking actions from there. So these 4 things will help you reclaim your power, your true inner power. I really hope that this video helped you to understand what true inner power means. What are the signs that you're disconnected from your power? What does actually disconnectedness mean? How can you regain access to your power? I hope this problem is solved for you. And I hope you'll be able to lead your life with more confidence, with more love to your own self, with just more energy. I wish you the best for your journey ahead. If you'd like to check out my podcast, The Journey Within, where I talk to my guests about their journey of self discovery, reclaiming their power, transforming their lives, and living their best lives, then you can watch it on the link here. I'll also put all of these links in the description box so that you can find them easily. If you like this video, if you found this helpful, do let me know in the comment section. I read each and every comment, and your comments encourage me to make more content like this. Don't shy away from commenting if this video has helped you. Thank you for watching. I'll see you in the next episode.